Welcome back to Chasing the Target. What a day for South Africa. What a day for Australia. Dean Elgar, the acting captain, playing a fantastic knock, match-winning knock, it looks like, from him. 140 of 211 deliveries. The amount of determination, grit, and just amazing mentality, man. This guy is crazy. Dean Elgar, fantastic performance from him. Pat Cummins over there in Australia, he bowled a match-winning spell as well. We don't know if it's match-winning yet, but it was match-turning for sure. और अभी ऐसा दिख रहा है कि भाई साउथ अफ्रीका आर इन द फ्रंट सीट राइट नाउ. ये पिच तो ठीक है, कल के जैसा नहीं था इतना अप एंड डाउन जो मैं सोच रहा था, लेकिन फिर भी इट वाज वेरी गुड पिच टू bowl on, and I just felt that India were a bit tad shorter. They were a bit inconsistent as well. Prasidh Krishna, Shardul Thakur, they got found out. Bumrah and Siraj, they set it up nicely. Pressure अच्छा डाले थे, मगर whenever Thakur and Prasidh Krishna came, they released the pressure. Pace उतना नहीं था, and they were giving hit me balls to the South African batters. David Bedingham, भाई क्या performance on debut, the way he batted, crisp timing, जो maturity दिखाया उन्हें बेहतरीन. I really enjoyed his innings, and Dean Elgar is always a thorn in India's flesh, always a thorn. This guy हर जगह जब भी इंडिया आती है साउथ अफ्रीका को, Dean Elgar is ready. He takes body blows, he plays and misses, plays amazing shots. He's just stuck at the crease, and this is an incredible knock. 140. KL Rahul also, he got to 100. I think brilliant. जो उन्हें टेल के साथ बैटिंग करा, outstanding, and it just shows कि भाई अगर उसको support मिला, India could have scored more runs. Yes, the pitch was a bit tougher yesterday, but still, I think the way Elgar batted today, it's taking India out of the game, because मेरे हिसाब से ये जो भी lead है साउथ अफ्रीका का, as long as it increases, it's going to be difficult for India. 100 तक पहुंच गए तो फिर मैच बहुत मुश्किल हो जाएगा. Unless the pitch eases up, which I don't think it will, then India have a chance. But right now South Africa are dominating. Like I said, Bumrah bowled really well, Siraj bowled well, but not enough in patches. They weren't backed up also properly by Shardul and Prasidh Krishna. Ashwin, ठीक है, he did like a job to contain, but not really picking up wickets, and it is poor performance from India today ball के साथ. और यही मैं नहीं चाह रहा था कि भाई जब conditions अच्छे utilize करो, pick up the wickets. They looked flat. You compared their bowling to the South African bowling, the Indian bowling looked flat. They were giving deliveries to hit, and with South Africa, their run rate was always healthy, always going at a positive rate, and that kept putting pressure on India. उन लोग ठीक है अटैक कर रहे थे with fields, and they were trying to put fielders in catching positions, मगर the bowlers weren't backing that up, and yeah, I think fantastic from South Africa overall the way they batted. Even Dezorzi जो batting करा भाई, he built a partnership with Elgar, he put pressure on the Indian bowlers, and then the way Bedingham batted भाई, बेहतरीन batting करा उन्हें, जो maturity दिखाया, जो उसकी timing है crisp एकदम से, तो मजा आया उसकी batting देख के. Overall, yeah, South Africa are in the front seat right now. Australia Pakistan के मैच में Australia are in the front seat. I think Pakistan अच्छी bowling करे सुबह में. अगर आप देखें शाहीन और मीर हमजा, हसन अली, आमिर जमाल भी विकेट्स लिए, सब catching भी अच्छी थी. They were taking the catches. सलमान आगा in particular in slips was very good. फिर पाकिस्तान की शुरुआत भी बहुत अच्छी थी. अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा बैटिंग करता, शान मसूद के साथ वो पार्टनरशिप अच्छी जा रही थी, लेकिन वो पार्टनरशिप के बाद Pat Cummins, he broke it with that cotton bolt, and after that the ball he bowled to Babar Azam, fantastic world class delivery, अंदर वाली ball, and yeah, Babar's poor form continues right now. A lot of pressure on Pakistan. They needed Babar to step up. अभी रिजवान बैटिंग कर रहा, टेल के साथ देखना पड़ेगा कितना उन्हें क्लोज लेके जा सकता पाकिस्तान को. If they can reach 300, get as close as they can. सुबह में opportunities रहेंगे स्कोरिंग के लिए, but Australia are also will be fresh. The bowlers will not give Pakistan that not much room for error. I like the fact that SA batsmen are playing positive and scoring runs, quickly putting pressure on Indian bowlers. Exactly, that's what they did, and whenever India gave them a loose ball, they picked it up and hit it to the boundary. I think it was fantastic batting and a very good balance of defense and aggression. And in these conditions, I was expecting, especially when the early wicket went, I felt that South Africa are under pressure. Now India are in the front seat. 245, the way KL Rahul set it up, I thought it was a good score. Lekin jo batting kare South Africa, it was so good, immense maturity by all of them. And Dean Elgar is just like, he's a beast, man. This guy has beast mentality. He doesn't give up. He takes body blows. He got hit just now before the end of day's play, and still he's going. He'll come out tomorrow. He'll make sure that he increases that lead. And if they get close to 150 or 100, 150 lead, then India are in trouble in this game. And they're already in trouble. I think South Africa are on the front foot. India को जल्दी 5 wicket निकालना पड़ेगा. They can't let that lead extend. 50-60 में अगर wrap up कर दिया तो फिर बहुत अच्छा है इंडिया के लिए. लेकिन there will be a lot of pressure on the Indian team, I think. And then their batting is also not giving you that confidence. If you see South Africa's top order and India's top order, ज़मीन आसमान का फर्क है. Shahnawaz Ali Khan, Walaikum Salam, bhai, Urdu language used
जी भाई, मैं मिक्स करते रहता हूँ, मेरी उर्दू उतनी शानदार नहीं है, लेकिन मैं मिक्स करते रहता हूँ। मैं उर्दू में भी बात कर सकते हैं, इंग्लिश में भी ट्राई करेंगे। बट हाँ, मैं वही बोल रहा था कि इंडिया की जो टॉप ऑर्डर और साउथ अफ्रीका की टॉप ऑर्डर है, जमीन आसमान का फर्क है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू sides in terms of performance in these conditions, quality in these conditions. And इंडिया नाम पे है प्लेयर, लेकिन इनएक्सपीरियंस भी प्लेयर्स है, और वो जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है उन लोग भी कभी कभी स्ट्रगल कर लेते हैं ये कंडीशंस में। आई फील दैट इज a big problem for the Indian team. And also the bowling भाई, like ठीक है, bowling अच्छी है, they've done really well in the past few years, लेकिन they're missing Shami. They need that kind of bowler, वैसा bowler रहना था ये pitch पे, hit the deck, अच्छा swing seam सब करता था उन्हें, you'd get the ball to move, and he is always bowling wicket taking deliveries, is consistent also. अगर उन्हें wicket नहीं ले रहा, वो run भी उतना नहीं खाएगा जितना इन लोग खा रहे थे. He will get edge, 4 edge, ये वो, like ये सब होता, but he doesn't bowl bad deliveries per se. He'll get hit for boundaries here and there, but these guys today, especially Shadab Thakur, Prasad Krishna, both poor deliveries that थे मेरे हिसाब से. It wasn't that test match level that you need. और खास तौर पे जब conditions आपको help कर देते, conditions are suiting the bowlers, आप जितने बार pitch को देखो उतने बार आपको दिख रहा है भाई ये bowling pitch है. घास इतनी थी, overcast था पूरा दिन, there was no sun out, barely any, and they just didn't make the most of it. And I think again the bowlers have disappointed. This happened last time as well. Last time around जब उन लोग टूर कर रहे थे इंडिया, वहां पे भी आपके पास 250 थे बोर्ड पे, सेकंड टेस्ट मैच में आप डिफेंड नहीं कर सके, एंड यू डिडंट मेक यूज ऑफ द कंडीशंस. एंड आई थिंक दैट आफ्टर Bumrah and Siraj, you need to continue that pressure, and that's what India missed up. South Africa were kind of missing it, but Coetzee and what do you call it, Janssen was still managing to pick up wickets, bowl some deliveries, and Rabada तो incredible था. तो Temba Bavuma क्यों नहीं करा बैटिंग? इसलिए नहीं करा भाई, उसको हैमस्ट्रिंग खींच गई, तो वो इंजर्ड है अभी. शायद वो फील्ड लेगा नहीं लेगा वो अभी पता नहीं, मगर मुझे तो ऐसा लग रहा है ही इज आउट ऑफ द सीरीज. आई थिंक ही इज आउट ऑफ द सीरीज, वो नहीं खेलेगा मेरे हिसाब से. बैटिंग अगर आए वो भी लाइक खड़े रह के करना पड़ेगा उसको, लेकिन इसलिए नहीं आया, वो हैमस्ट्रिंग है, ही इज प्रॉब्ली आउट ऑफ द सीरीज, इंजरी हो गई उसको, तो मुश्किल है उसको वापस आना, इसलिए वो बैटिंग नहीं कर रहा. और उसके बिना भी जो साउथ अफ्रीका परफॉर्म करी, आई थिंक बहुत काबिल तारीफ है. बहुत जबरदस्त प्रदर्शन थी साउथ अफ्रीका की इन द लास्ट कपल डे, स्पेशली टुडे भाई. जब आप 240 खा लिए, के इतने अच्छे पोजीशन में थे, आप इंडिया को 150 में आउट कर सकते थे, लेकिन 240 तक गया, मगर फिर भी आप आके बैटिंग करे टफ कंडीशंस में. आई थिंक यू हैव टू अपलॉड देम. कोई नहीं शाहनवाज भाई, नो वरीज एट ऑल. But yeah, I think overall South Africa will be very happy. India are under pressure now. Every run will count and it will put pressure on India, and South Africa, every run will help them to win this game मेरे हिसाब से. India, like I said, they have to cut this lead as short as possible. If they can cut it to 50, that will be great for them. If not, they need to try to wrap things up. The more it goes over 100, it becomes impossible for India in these conditions मेरे हिसाब से, especially जो South Africa की bowling है, जो performance कर रहे हैं उन लोग, मुश्किल होगा टीम इंडिया के लिए. If you guys have any questions, you let me know. Ibrahim bhai, we got a question from you. Do you think Pakistan giving extras, 52 extras, could be a difference between a win and loss? Yes, definitely it can be. 50 run दे दिए, it would have been 250, 260 score, which is much more manageable. Pakistan, even though they lost 6 wickets, they're still close to 250 right now. It would have made a massive difference. I think they're spraying the ball. I know 20 runs. On occasions, you can blame Rizwan in terms of keeping, but there were some deliveries. It was nothing to do with Rizwan. They were just spraying the ball here, there. The wicketkeeper could not do anything. I know it goes against his name and everything like that, but I'm just looking at this perspective. I know in Pakistan there's a lot of debate between Sarfaraz and Rizwan. I'm not getting into that. I'm just saying that in this occasion, in this game, I don't think Rizwan could have done too much to save those extras. He took a very good catch today also. I think वो जो inside edge carry का था, that was a very good catch, one-handed catch, low diving catch. मुझे पसंद आया था. भाई बिग फैन योर चैनल लास्ट वर्ल्ड टू टिल डेट भाई. अरे शुक्रिया बहुत बहुत. बाबर का भाई फॉर्म नहीं चल रहा था, ठीक है, आज उसको अच्छी डिलीवरी मिली अंदर वाली बॉल, मगर उसको सेटअप कर रहे हैं कमिंस इन पर्टिकुलर, खास तौर पे उसको अच्छा सेटअप करा, बाहर निकाल के फिर अंदर गुजारा बॉल को. एंड बाबर की बस फॉर्म नहीं है अभी, ही शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस. आप देखें वर्ल्ड कप में भी इतने अच्छे डिलीवरीज नहीं थे जो उसको अब मिल रहे हैं, मगर वहां पे भी उसकी वो विकेट दे रहा था आफ्टर गेटिंग सेट. तो अभी उसका माइंड
माइंडसेट का इशू है, एंड ऑल्सो फॉर्म हर प्लेयर को होता है। विराट कोहली को आप देख लो, 3 साल सेंचुरी नहीं मारा या जो भी है, ऐसा बैड पैच आता है और बाबर का बैड पैच है, मगर मेरे हिसाब से वो रिकवर करेगा। वो क्लास बैट्समैन है, अगर आप उसकी शॉट्स देखें इन जनरल, आई थिंक ही विल कम बैक। मे बी ही इज नॉट द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, बट ही इज पाकिस्तान टॉप बैट्समैन मेरे हिसाब से, एंड इज अ टॉप प्लेयर, मतलब टॉप क्लास का प्लेयर है, और ही इज जस्ट गोइंग टू बैट फॉर्म। आई थिंक उसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, जैसा विराट कोहली को सपोर्ट करे इंडियन टीम। आई थिंक खास तौर के ड्रॉप नहीं करे कोच कैप्टन, तो बाबर को रखना है। जितने भी वो फेल कर रहा है, ठीक है, उसको बैक करते जाएं अनटिल ही स्टार्ट्स गेटिंग, बिकॉज ही शोन पास्ट में कि भाई मेरे पास एबिलिटी है मैचेस जिताने। वो ऑस्ट्रेलिया में खुद सेंचुरी मार चुका है, तो ऐसा नहीं है कि कंडीशंस है या वो है, बस वो उसका बैड पैच चल रहा है अभी। एंड उसमें भी आप वर्ल्ड कप में देखे 50s भी मार रहा था, बट ही वाज स्टिल नॉट इन द क्लीनेस्ट जोन। उसका जो पीक फॉर्म रहता वो नहीं चल रहा था बाबर का, तो मेरे हिसाब से सो उसका ये प्रॉब्लम है। But yeah, overall, Pakistan will be disappointed, especially 120 for 1 थे, उसके बाद जो collapse हुआ, बाबर की भी विकेट, साउथ शकील पहली बार 22 के अंडर आउट हुआ, शायद उसका जो रिकॉर्ड है एवरेज है 22 से कम नहीं होता, और समथिंग लाइक दैट, लाइक इन टर्म्स ऑफ हिज स्कोर्स ही डजंट हैव एनी स्कोर लोअर देन दैट। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की बैटिंग बहुत ज्यादा कलेप्स हो गई, और प्रॉब्लम है उसमें बाबर को स्टेप अप करना जरूरी था। और इवन शान मसूद और वो जो शॉट खेला रेकलेस दिखा मुझे, ठीक है वो एग्रेसिव खेलना चाह रहा था, लेकिन अब भी 2 विकेट गिरे थे, और वो कैप्टन ने अच्छा खेल रहा था, शॉट्स भी खेल रहा था, ठीक है, लेकिन आई थिंक वो टाइम पे वो शॉट सिलेक्शन सही नहीं था, क्रॉस द लाइन मारने गया लाइन को, एंड वो ऑलवेज मुश्किल होती है टू द ऑफ स्पिनर इफ यू गोइंग हिटिंग हिम अगेंस्ट द लाइन। सर समीर रिजवी कैसा प्लेयर है सीएसके का? भाई वो डोमेस्टिक में मैं अच्छा कर, आई थिंक यूपी लीग या कोई लीग में, मगर मैं उसको उतना खेलते हुए नहीं देखा, बाज क्लिप्स इधर उधर देखा था, लेकिन आई थिंक अंडर 23 प्लेयर है वो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ही इज अ गुड बैटर, वन डाउन खेलता है वो, एंड आई थिंक फिनिश भी कर सकता है, बट मैं उसको ज्यादातर नहीं देखा। अब देखेंगे, सीएसके तो बहुत हाईली रेट कर रहे हैं उसको, सुरेश रैना पर्टिकुलर, वो भी यूपी के ही हैं शायद, तो उसको देखे शायद वो लीग्स में, तो काफी चर्चा हो रही है बंदे के बारे में। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन हफीज टेलिंग प्लेयर्स दैट seen me lazy or lethargic in the field, we'll find them $500? I don't know how's that going to work. Sometimes when you're too strict on your players or your students or anything like that, it backfires on you. So I think there's ways to motivate players. There's ways to improve this laziness, this and that. I think it should be more than finding, there should be like practices in the like outside of the game, match के बाहर training sessions में ये develop आप कर सकते हैं, so it doesn't allow you to be lethargic in the field. It questions more of your preparations rather than what's happening in the match. अगर आप मैच में lethargic है, मतलब आपके preparations जो है, जो आप तैयारी करते हैं मैच के लिए, वो सही नहीं होता। तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि भाई प्रैक्टिस सेशंस कैसे चल रहे हैं, वहां पे कैसी ट्रेनिंग हो रही है, वहां पे फुल आप 100% दे रहे हैं या नहीं दे रहे। दैट इज more key than I think what's happening in the match, because look, the match is a product of your practice, a product of your preparation mere hisab se, so that's what I feel over there. But yeah, if you're looking at from Pakistan's perspective, what they have to do is trying to get to 300 as close as possible. रिजवान जितना भी पुश कर सकता पुश करना पड़ेगा उसको, जंप बाउंड्री अपॉर्चुनिटीज है। वो एक अच्छा ऐसा मारा था, आई थिंक छक्का या चौका था स्क्वायर लेग पे, वो अच्छा शॉट था। वैसे शॉट्स अगर वो निकाल सकता है और थोड़ा प्रेशर डाल सकता है ऑस्ट्रेलिया पे, 300 के करीब अगर लेके जा सकता है, आई नो बहुत मुश्किल आस्क है, मगर अगर वो कर सकता तो फिर ये गेम थोड़ा बैलेंस में आ सकता है। और इंडिया सॉरी, इंडिया का ये कि भाई दे हैव टू गेट साउथ अफ्रीका आउट, they have to get South Africa out as quickly as possible. जल्द से जल्द साउथ अफ्रीका को निकालना पड़ेगा। Sorry about that. I'm a big fan. Shahrukh Khan, Tamil Nadu cricket player, and please explain not successful. तो शाहरुख खान तो भाई डोमेस्टिक सर्किट में बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा था। आई थिंक आईपीएल में उसको जो बैटिंग पोजीशन चेंज कर रहे थे, कभी ड्रॉप कर दे रहे थे, उसको एक स्पेसिफिक रोल नहीं दे रहे थे, एंड कभी कभी मुश्किल भी रोल रहता वो फिनिशिंग वाला। आई थिंक उसको ज्यादा यूज कर सकते थे शाहरुख खान को। उसके बाद ठीक है, ही फेल्ड, एंड ऑल्सो नाउ इन द डोमेस्टिक दैट्स अफेक्टेड हिज डोमेस्टिक गेम, ही इज नॉट बीइंग एबल टू स्कोर रन्स, बट वी सी
season he had before that, जो पिछले 2 साल से वो जो बैटिंग कर रहा था, I think एक उन्हें टूर्नामेंट भी जिताया था लास्ट बॉल पे, वो सईद मुश्ताक अली और समथिंग, he won it for तमिलनाडु. But he has to work on his game, he has to develop. ये भी है कि भाई उसको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई पहले आईपीएल सीजन में या जो भी है लोग आपको इतना जानते नहीं, मगर उसके बाद वीडियोस डेवलप होते हैं, एनालिसिस डेवलप होता है, आपको टारगेट करते हैं, एंड यू नो जब आपको ऐसा टारगेट करते हैं आपको फिर अलग मेथड्स निकालना पड़ता है. यू हैव टू कम अप अलग प्लान के साथ एंड मेक श्योर कि भाई काउंटर करना है, ये जो आपको टारगेट करे वो कैसा काउंटर करना है, अपने वीकनेस को कैसा स्ट्रेंथ बनाना है, वो उसको देखना पड़ेगा मिस्टर शाहरुख खान को. न कोई बात नहीं सर, बहुत शुक्रिया आप जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया. Lekin, yeah, it looks like right now Australia is on top, South Africa is on top as well of the test matches. I think Bangladesh का victory थी आज T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ. Bangladesh played really well over there. They won the first T20. That will give them a lot of confidence भाई, because अब going ये World Cup year है T20 का next year, अब थोड़े दिन के बाद 2024 में. और अगर आप न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड को हरा रहे हैं, उनको confidence मिलेगी वहां से. I know अलग अलग problems है बांग्लादेश क्रिकेट में, politics काफी है, लेकिन ये जो victory थी न्यूजीलैंड में उनको काफी confidence देगा मेरे हिसाब से. So with their big bash भी चल रहा है. I know the Australian players are not playing the international ones, मगर है players वहाँ पे. But yeah, there is quite a bit of cricket going on. और अभी देखते हैं कि I know that जल्दी matches कभी बारिश या बैड लाइट से खत्म हो रहे हैं. एटलीस्ट फॉर गेटिंग क्रिकेट. ऐसा फोरकास्ट था कि भी दोनों मेलबोर्न और साउथ अफ्रीका में कि भाई बारिश पूरे दिन होगी एंड इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू प्ले. इंडिया हैड अ गुड डे बट साउथ अफ्रीका 160%. अवेश खान गेटिंग 3 विकेट्स एंड दैट्स वेरी पॉजिटिव. आई थिंक अवेश खान इज अप इन कमिंग बॉलर. ही विल हैव टू बी यूज्ड स्पेशली वाइड बॉल फॉर्मेट में. एंड यू नो यू कांट हैव बुमराह, सिराज, शमी फॉरएवर. आप देख लो शमी नहीं है, लुक हाउ मच दे आर मिसिंग हिम एंड दे नीड टू डेवलप प्लेयर्स लाइक दिस, लाइक अवेश खान, मोहसिन खान, प्रसिद्ध कृष्णा, मुकेश कुमार. These guys have to come in and start taking the lead and improve the bowling and get it to a level where कि भाई अगर ऐसा नहीं है bowler we can still. You see South Africa में देख लो आप, एनगीडी नहीं है उनके पास, यू नो नौखिए नहीं है, दो बड़े बॉलर नहीं है उनके पास, फिर भी देखो यानसेन बर्गर जो डाला इतना इंप्रेसिव. फिर आपका यू नो कोर्ट से भी डाल रहा है, तो लाइक यू नो ठीक है उन लोग हर गेम परफॉर्म नहीं करेंगे, दे आर आल्सो न्यू टू द गेम, बट दे स्टिल हैव ऑप्शंस एंड इंडिया नीड टू डेवलप दोस ऑप्शंस पर्टिकुलरली इन फास्ट बॉलिंग. यू कैन नॉट लिव योर लाइफ ऑल ऑन बुमराह, सिराज एंड शमी, बिकॉज मुश्किल है उन लोग को फिट रखना हर बड़े सीरीज के लिए. स्पेसिफिकली अब देखो T20 वर्ल्ड कप में अब जैसा इंडिया की टीम डायरेक्शन ले रही है, it might be a younger team, so over there you know these kind of bowlers will really help them if they and that's why they need to step up, they need to play these games, get that exposure and make sure they keep improving day by day. improve करना जरूरी है, because जो लेवल रहेगा वर्ल्ड कप में, इंटरनेशनल लेवल रहेगा, खासतौर पे यू नो जब आप पाकिस्तान से खेलेंगे, इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से चैलेंज रहेगा आपको, तो ये बॉलर्स को ये कंडीशंस में also it's good to get exposure in international places and play these India A-tours. I think बहुत important रहते हैं भाई, because particularly India T20 लीग्स नहीं खेलते ज्यादा, तो सिर्फ IPL खेलते हैं, तो ये जो इंडिया ए के टूर्स है उन लोगों को एक्सपोजर देते हैं, अलग कंडीशंस के, अलग माहौल के, पिचेस अलग तरीके के रहते हैं, एंड दैट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट आपके डेवलपमेंट में मेरे हिसाब से. हाँ. Did you see Rinko Seal fielding as sub today? I was surprised seeing him. He's not part of the squad. Yeah, even I didn't understand that. I saw him yesterday also. He's sitting on the bench, and today he was fielding. Maybe he is part of the squad now. I don't know. I didn't understand why he's there fielding. Whether he's there because Abhimanyu is not there. I don't know what the problem is. Kuch to hai gadbad udhar, but yeah, I was also surprised to see Rinko. He was fielding today. He tried to stop a boundary, बहुत तेज जाके डाइव मारा था, लेकिन unfortunately he couldn't stop it. But हाँ, देखते हैं क्या होता आगे जाके. I don't know exactly what the reasoning over there is. But that pretty much wraps it up. Again, tomorrow we will join you after day's play. We'll try to get some more videos now. Faiz is a bit busy with his with some other work, but once he gets free also we'll keep increasing content and make sure that you hit the like button, subscribe button, अपने families के साथ, friends के साथ share करो ये channel, और लंबा discussions करेंगे. We'll have more content, more lives together hopefully, and discuss the cricket. Abhi filhal South Africa is on top, Australia is on top, and yeah, India and Pakistan need not maybe a miracle, but they need to play at the top level and make sure the mistakes are limited to get back into this game. I think Abhimanyu is playing the India match. Us hisab se maybe that's why Rinku was there. But yeah, it is confusing, man. I don't really understand why that has happened over there. I really don't get it, to be honest with you. But yeah, thank you so much for joining, guys. Thank you, Ibrahim bhai. Thank you, Shah Nawaz bhai.
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, and catch you guys hopefully tomorrow. Take care, enjoy the rest of your night, and enjoy the games tomorrow.